जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह। सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माफी चाहूंगा। वाकई में मैं तकरीबन आधे घंटे ज्यादा डिले हो गया हूं मैं, और ये मेरी बहुत मतलब मैं क्या बताऊं। आई विल गिव यू 100 पुशअप्स फॉर दैट सर। एंड No, I'll be wanting more. डेफिनेटली डेफिनेटली सो मैं because बहुत बहुत because माफी चाहूंगा because मैं। you being Fauji, then 100 is very less. ट्रू सर, ट्रू 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 दोस्तों, अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम ट्रूली वेरी हैप्पी। देयर इज एन ऑफिसर हु many of us, especially me, we have idolized. We see his journey, we see his success story, and we really get inspired from the bottom of our heart. Yes, who needs no introduction at all? आप सबने इनको देखा है। आपने बड़े बड़े बैनर्स पे, होर्डिंग्स पे, आपने मॉल्स में, एयरपोर्ट पे, कहाँ कहाँ आपने कहाँ नहीं देखा आपने, ये बताइए। और एक ऐसा चेहरा है जो एक बहुत ही एक it radiates positivity, and you have seen this face a lot many times, who has been a very illustrious officer of the Indian Armed Forces, very fine officer. Well, I can just go on. He needs no introduction at all. I can go on talking about him, but instead of me going on further, let's hear it straight from Colonel Nitin Mehta. Sir, thank you very much for taking our time, sir. Thank you so much, Major Shah, for having me here. I've been watching your programs number of times, and you are doing a wonderful job and bringing out people's story and inspiring people. That's a great job. And congrats to you for being the TEDx speaker. And I believe you got maximum number of speeches that also record you are holding. Congratulations to you. That's amazing. थैंक यू सर, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर। शुरू से स्टार्ट करते हैं सर। आप वी विल कम टू द फैक्ट दैट यू बिकम अ सुपर मॉडल एंड यू बिकम एन एक्टर एंड यू नो एवरीवन, बट व्हेन यू वर slightly lesser known than what you are today, and you were still a hero that time, what inspired you to actually come forward and join the army, sir? Uh, well, I was born and brought up in army family. My father is an ex EME officer. So, bachpan se hi I have seen him in uniform, and once you live that life, you always want to wear that uniform because you most for the most of the sons, your father is your idol, and then you look at that uniform, which is more inspiring. So then there was nothing to look about because everything was at home. The uniform was at home, which I was seeing every day. So that inspired me, and yes, I wanted to join the National Defense Academy, and which I was able to join. And then finally, after 4 years of training in India, I could get that uniform, which I longed for 21 years in my life. Wow, so wow, that is so brilliant. So that explains the question that I had in mind about you, that क्यों आपने EME ही क्यों choose किया? Because being an artillery officer, we had a very very close association with LRW, with EME, and you know we had an EME rep permanently staying with us in our regiment, and he would always be with us. So cutting a very long story short, क्योंकि आपके फौज के किस्से वो भी बहुत लंबे होंगे, but sir, would you have? There would be a lot of memories from the academy, from your army days. Anything particular that comes to your mind? Though I know there would be hundreds and thousands of them. मगर कोई भी एक आध आप अगर आप शेयर करना चाहें तो। Well, academy you remember always because that is the toughest period of your life. National Defense Academy, spending 3 years there, and because you straight away go after your 12th into that phase of life, you miss that college life, what other people see outside. So you cannot forget each day of India. I believe, each day is so tough, and you feel that in fact, everybody used to feel that why have you come here? But that place, it has got a nostalgic feeling there, and I would say that NDA has always been in my memories every day because that training what we had there, what built me into an officer, and later on after being an officer, what profession I've chosen right now.
everything goes to National Defense Academy and the training there. And my instructors are all uniform people, I would say. So I don't have any particular. I would say that everything there, from morning routines to the night uh, fallens and the punishments during the midnights, everything I remember, each and everything I remember. And it was really a lovely phase of my life, which I cannot explain in words, I believe. But yes, that and everybody is so motivated there, because final the outcome has to be that olive green. So nothing matters. Those training days don't matter. Absolutely, sir. Absolutely. So tell me, how was life growing up as a Fauji brat? Again, I'm rewinding slightly, going back before NDA. So आपका वो जोश जुनून, और आप जाहिर सी बात है आप शायद वो टीवी पे आप वो वॉर मूवीज, फौजी सीरियल या कमांडो कॉमिक्स पढ़ते होंगे, आप उनसे भी आप इंस्पायर हुए होंगे काफी हद तक. So how was Yes. sir, as a Fauji brat, sir? यस एब्सोल्युटली राइट. वो कमांडो मैगजीन आती थी पहले, वो एक्शन वाली, वही सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती थी. एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर आल्सो, कि हाँ ये कमांडो में ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, एंड द स्टोरीज. एंड yeah, as a Fauji brat, life is totally different, because you're not wearing the uniform. You are treated as a Fauji kid everywhere. So I told my father when I started wearing my uniform, बोला he asked me कि कैसा लग रहा है. मतलब ये तो लाइफ पूरी बदल गई है. इट वॉज बेटर एज अ फौजी किड, क्योंकि कहीं पे भी कुछ होता था, किड्स टेक प्रायोरिटी. सबसे पहले खाना मिलता था, सब कुछ पहले मिलता था. एंड देन व्हेन यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, यू आई joined as a second lieutenant, and I was my first EME unit was a unit where we had 52 officers. That is the biggest unit. So me and one of my course were the youngest. So हमारा खाने का टाइम वो 52 के बाद आता था. So suddenly there was a drastic shift. सबसे पहले प्लेट लेने से लास्ट में. But yes, Fauji brats, as being a Fauji brat, you get a lot of exposure, a lot of facilities are there. You become strong, because after every 1.5, 2 years, you are shifting your places, going to a new place, going to a new school, uh, meeting with new people, meeting new friends, making new friends, which is the most difficult part. After every 1.5, 2 years, you leave your place and go to a new place and adjust according to that place. So yes, pros are there, cons are there, but I would say Fauji brat, like as being about Fauji brat, life was amazing that time. सर सर सर, आपकी कभी कोई ख्वाहिश हुई फौज में आने से पहले, इंडिया आने से पहले, कि आपको मॉडल बनना है या आपको एक्टिंग करनी है, या उस ग्लैमर की तरफ कभी आपका खिंचाव हो सर? No, I never had that inkling कि मेरे को कहीं मॉडलिंग करना है, कुछ करना है. कभी भी नहीं हुआ. इनफैक्ट जब मैंने 12th के बाद एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए में ऑल्सो आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द cultural activities what we used to have there. Totally into sports and every other thing. But yes, I walked the ramp in my fifth term of my NDA. There's a college competition called Insync in Pune, in which NDE used to take part along with the other colleges of Pune. So in that, I was chosen by some group of people there, that I can be a I can we can do a ramp show depicting the uniforms of army and the lifestyle of National Defense Academy. So that was the first time I walked the ramp in NDA in my fifth term. That was the first time, and then that's it. Never happened again in uniform. Sir, I know about Insync very well, sir, because I did my graduation from Pune, from Ferguson College. तो हम लोग अक्सर एनडीए कैडेट्स को देखा करते थे, और एनडीए बॉल जो वेरी वेरी फेमस, एंड क्विक सिल्वर, एंड Yes. आकृति. आपके टाइम पे एआईटी शायद नहीं होगा, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से. ये बाद में No, फाउंड. it no, that time it was not there. But बाद में मैं जब पुणे गया था, जब I was posted there, I was doing my degree course. Also, I'd gone for the Golden Jubilee of the National Defense Academy. That time it was there. Sir, that's so. And
टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग एक ग्लैमर होता है, कहीं भी ख्वाहिश थी दिल के किसी कोने में कहीं पे, दैट व्हेन यू वुड सी अ मॉडल और you would see Amitabh Bachchan for that matter or somebody on screen and you would want to be like that. ऐसी कोई ख्वाहिश थी सर कभी दिल में? या एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं तो ख्वाहिश तो हर एक के दिल में होती है। हाँ, जब हम देखते हैं फिल्म स्टार्स को देखते हैं और मॉडल्स को देखते हैं, ये ग्लैमर देखते हैं, तो व्हाटएवर सेड एंड डन, हम बाहर से तो चाहे बोलें कि हम नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक का होता है कि यार मैं भी ऐसा देख सकता हूँ, या मैं इससे मिलूं तो क्या अच्छा होगा। ये तो रहता ही है। आई वुड नॉट डिनाई दैट, झूठ नहीं बोलूंगा कि हमेशा रहता ही है अंदर ही अंदर कि काश मैं भी ये कर पाता, और ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं लग सकता हूँ। इट इज नेचुरल। That is very true, sir, and very rightly brought out by you. Very correctly and very honestly brought out by you. बिल्कुल ऐसा होता है सर। I mean, even as actors, अक्सर क्या होता है जब हम किसी एक्टर को स्टेज पे देखते हैं या स्क्रीन पे देखते हैं और वो दिल में लगता है कि इससे शायद बेहतर काम मैं कर लूं, इससे बेहतर मैं बोल लूं, इससे बेहतर एक्टिंग मैं कर लूं। You know, these things do come to the mind. I think ये एब्सोल्युटली हमारी राइट, एब्सोल्युट राइट। ये हमारी एक पैदाइशी बीमारी है सर एक्टर्स में। Because you are also in the same line, so you are also you also know about this कि कैसे होता है कि हाँ, वो अपना तरीका और दूसरे को आप हमेशा कंपैरिजन करते ही हो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। ये बताइए, फौज से आप रिटायर हो गए, 21 साल की बड़ी अच्छी सर्विस करी आपने, यू हैड अ वेरी वेरी गुड सर्विस रिकॉर्ड एंड यू नो योर सीनियर्स, योर कोर्समेट्स एंड स्पेशली मोस्ट एवर योर जूनियर्स, योर सबऑर्डिनेट्स, दे स्वेयर बाय योर नेम। वो आप किसी को भी पूछ लिए फौज में एंड यू हैव अ सॉलिड रेपुटेशन इवन नाउ इन द आर्मी सर। सर ये बताइए, आपने 21 साल के बाद आपने जब फौज छोड़ी and did you have a plan in your mind? Did you go in for a resettlement course? तो अक्सर क्या होता है, अनुमान तौर पे जब फौजी आदमी फौज छोड़ता है तो लोग सोचते हैं that oh, army security job, he gets typecasted and branded कि भाई ये फौजी है तो सिक्योरिटी के लिए फिट है, पर ऐसा नहीं है। आर्मी ऑफिसर्स कैन डू एचआर, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग, acting, modeling, anchoring, you name it. Forge trains us for everything in the world. तो कोई आपका प्लान था उस टाइम पे कि फौज छोड़ के ऐसे से करना है सर? प्लानिंग तो बहुत की थी मैंने, बिकॉज आई वाज इनटू मोटरसाइकिलिंग, and I had ridden from Delhi to Goa, and I've done complete Punjab solo on the bike. सो मैंने सोचा कि छोड़ता हूँ, एंड इन द मीन टाइम आई थॉट कि मैं वो 6 महीने का जो कोर्स होता है लास्ट में देते हैं फॉर दिस MBA, सो आई डिड फ्रॉम MIT नोएडा। सो आई थॉट कि कर लेना चाहिए बिकॉज आई एम शिफ्टिंग आउटसाइड। आई नो दैट सब कुछ होता सेम है बाहर और अंदर, बट देयर आर लॉट ऑफ slangs and terminologies what we don't know in army, but it is used outside having the same meaning, but we are not used to that. So we should I should learn that also if I have to be outside. I did a 6 months course in Noida, but in that one professor was there. He was a finance पढ़ाते थे हमें, and I he just opened my mind. I just attended his 3-4 lectures, and after that I stopped going to the class only because I thought कि मेरा mind ही बिल्कुल change हो गया कि मैंने अभी नौकरी करनी नहीं है। So he just brought some calculations and all in front of me कि how things should work out and what mistakes we do, and there was a drastic shift in my mindset. I stopped searching for a job or stopped for कि मैं कोई कुछ और कुछ काम करूं। मेरे को लगा यार अपना ही कुछ काम शुरू करना चाहिए। देन आई प्लान के मोटरसाइकिल का टूरिंग शुरू करता हूँ, तो एटलीस्ट घूमते भी रहेंगे और लोगों को घुमाते भी रहेंगे। तो but you plan a lot of things, but what life has written for you, you cannot change. Absolutely sir. Sir, So I thought biking it is में better where whatever the turn is coming, I should take that turn rather than resisting it. सर बाइकिंग में कौन सा, लाइक यू आर पार्ट ऑफ द हार्ले डेविड क्लब और डेविडसन क्लब और द ट्रायम्फ क्लब, और क्योंकि कुछ क्लब्स हैं ये। Yeah, I was into a Harley Davidson club. So with that, I had been riding for 4-5 years. But
नाउ आई स्टॉप राइडिंग बिकॉज अभी टाइम थोड़ा नहीं मिलता। अभी थोड़ा सा डर भी लगने लग गया है कि अरे यहाँ काम जा करना है, वहाँ काम करना है, ये होगा वो होगा। कि हाँ ये ज्यादा ज्यादा टैन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। I can और very well पहले imagine, कुछ नहीं sir. होता। हाँ हाँ। I can very well imagine, sir. Like, before during Forge, I would enjoy the Russian obstacle, monkey row, Burma bridge, कूदना फादना, नाइन vintage, ये वो। अकेडमी में आने के बाद थोड़ा डर बैठ गया था दिमाग में। बैठ 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 या हाँ, कि अगर हाथ पैर टूट जाए तो रेलीगेट हो जाएंगे 6 महीना। वो हाँ। 6 महीने का झगड़ा और एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। नेक्स्ट। ट्रू। वेरी ट्रू। So, so then after your 6 months at MIT, उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद? Did you sit for any campus placements? Did you join a corporate sector? क्या हुआ उसके बाद? और नथिंग, वहीं से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया था कि कुछ और करता हूँ। एंड फ्रॉम देयर ओनली इट केम कि मैं बाइकिंग का कुछ शुरू करूंगा। बट इन बिटवीन व्हाट हैपेंड वाज, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे आई वाज सिटिंग फॉर flight, waiting for a flight, and somebody approached me there only at the airport with a small script. He liked my this look. So, in fact, 20th of May 19, sorry, 20th of May 2016, I hung my boots. So, exactly now, 7 years now. And just after that, from that very day, I stopped shaving. कि मेरा बहुत हो गया कि काफी साल एनडीए से, जब से एनडीए घुसे थे पहले दिन से ही गंजे हो गए थे। तो मतलब अब कुछ नहीं, अब दाढ़ी वाड़ी जैसे आ रही है आने दो, कोई हेयर कलर शलर कुछ नहीं करूंगा, बहुत हो गया यार। अब रिलैक्स, रिटायर्ड आदमी, रिटायर्ड जैसे आराम से। तो विद दिस लुक somebody approached me at the airport, के your look is very nice and I got a small, I'm planning for a small movie and आप कर सकते हो। मैंने ठीक है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। ही टुक माई मेल आईडी एंड मॉर्निंग में मैंने उसका वो देखा, मेल आ रखी है। बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका। सो बट कपल ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिल्ली ऑल्सो टोल्ड गया तेरा लुक बहुत अच्छा है, आजकल ये लुक चल रहा है, सॉल्ट पेपर 2016 में था, ट्राई कर ले। मैंने ठीक है ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे ही ट्राई करके कोई फोटोग्राफर ढूंढो, ये ढूंढो, फोटोग्राफर ढूंढ लिया। तो कि पोर्टफोलियो चाहिए होगा, पोर्टफोलियो बना के after 2 days I got my first work from the same photographer who was taking my portfolio. So he told me then, after 2 days of my portfolio shoot, that photographer told me कि फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था ना, तो मेरे को लगा था कि फ्रैंकली टेलिंग यू कि मेरे को क्विक मनी मिल जाएगा, 40-50 हज़ार रुपए फर्स्ट क्लास आपकी फोटो, क्योंकि आपको किसी मिडिल एज मैन को शौक चढ़ा है मॉडलिंग करने का, उसको फोटो खींचूंगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, 5-6 घंटे में निपटा दूंगा आपको, काम खत्म। फ्रैंकली टेलिंग यू। बट जब आपकी मैं पिक्चर्स खींच रहा था और जिस तरह से आप खिंचवा रहे थे, तो आई फाउंड कि नहीं, यू हैव, योर पिक्चर्स आर सच दैट इट दे योर फेस एंड योर आई स्पीक्स। सो दैट्स व्हाई मेरा क्लाइंट का शूट था, मैंने आपको दिखाया एंड सडनली ही इज आस्क्ड फॉर यू। मेरा अच्छा चलो मैं आ जाता हूँ। और ऐसे ही घर में बैठे बैठे ही गेव मी अ कॉल अराउंड 9:30 के मैं ऑलरेडी शूट कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर सम अदर मॉडल्स। बट आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय क्लाइंट शूटिंग एंड शोइंग योर पिक्चर्स जो मैंने परसों शूट किया, एंड ही वांट्स यू राइट नाउ, आप खाली हो, आप आ जाओ। मैं ठीक है आ जाता हूँ। From there it started, and this is how I got into this modeling. It was totally, in fact, I would say it was luck. I was at the right time, right place with the right person who could just that bring that uh, spark in that in my mind, which might be sleeping somewhere for ages. वो उठा के वो Wow. बंदा चले गया और वो स्पार्क थोड़ा सा जला के निकल गया। Wow. So 2016, you hung up your boots. I remember when I had a very hearty conversation with you when I met you, and you were very warm with me. Just as a brother officer, उसी नाम पे you gave me a very warm hug. जयपुर में sir, after a very I mean, grand fashion show. फैशन शो में बड़े yeah, बड़े सुपर मॉडल्स थे, बड़े बड़े डिजाइनर्स थे. There was one model out of all of them who caught my eye, and he stood out completely, and he was a model with a beard. सो जब मैं आई डोंट नो हु ही वाज, कोई एक थे वहां पे रैंप पे, एंड वाओ, फिर जब आफ्टर पार्टी हुई, आफ्टर पार्टी में मेरे को वो दिखे कि भाई वो, आई आस्क पीपल, दिस गाय ही स्टूड आउट वेरी वेल, इनको तो आप जानते होंगे नहीं, कैसे हाउ डिड आई नो?
ये आर्मी में थे? आर्मी में थे? कौन ये? नहीं सर, इनकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है। हाँ हाँ। तो मैं, अच्छा, नो नो, आई यू श्योर? मैं ओके, तो देन आई मस्ट हैव द गट्स टू करेज टू कम अप टू के भाई फौज में थे। सो वो एक टिपिकल बॉडी लैंग्वेज होती है हमारी, आती मैं स्टेज पे आता था, जैन सर, एंड यू immediately connected straight away. So you were stretched your hand and you said Jain, and you gave me a very warm hug and we bonded straight away. फिर मैं आपसे Yeah, पूछा I clearly remember that. I clearly remember that. thank you sir. So then I asked you about your journey, about the about कैसे आप इस फील्ड में आए, and you mentioned about the entire Air Force thing. So this is normally से आपने बताया कि आप वो फोटोग्राफर है कि आपको मिडिल एज में शौक चढ़ा है मॉडलिंग का। बहुत लोग होते हैं अनुमान तौर पे 16, 17, 18 पे उनको मॉडलिंग का शौक चढ़ता है। Here is an example, an inspiration, a living example after retirement from the army, curls up, then becoming a model, and not just becoming a model, becoming a supermodel, becoming an actor, becoming inspiration for what not. सर ये बताइए, उसके बाद तो आपने फौज के बाद आफ्टर डूइंग अ मैनेजमेंट कोर्स एट एमिटी नोएडा आपने नौकरी नहीं करी कहीं पे भी, फॉर इवन फॉर अ शॉर्ट व्हाइल? No, no way. सर I did आप not work anywhere. कहीं नौकरी नहीं ली, कुछ नहीं लिया. And this thing started, तो फिर मैं I think मेरे को actually मजा आने लगा इसमें, मॉडलिंग में एंड फोटो शूट्स में. So I thought कि यार यही एक बार मतलब इसी को I should try and give some time. I know that these things will take time, but if you keep on going and just push yourself through in it, something will definitely come. So I just आप thought के बे सब छोड़ के, क्योंकि कहीं भी कुछ अगर मैं पार्ट टाइम लेता कुछ लेता तो I think I would not have been able to give that much of dedication, devotion to the this work. So I thought कि if अगर कोई काम पकड़ना ही है तो you have to be 100% into it. So got एब्सोल्युटली सर, just dived into it कि पता नहीं कि कितना गहरा कुआं है, बस कूद जाओ, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है. very true sir, very very true. So there was a comment from someone who which came in, यहाँ पे बीच में आया था वो, I missed it somewhere. हाँ ये रहा comment. Kiran Singh writes, Nitin sir, did you join any acting course? Before sir answers that question, let me try attempting that question. I don't know whether you did a course or not, but I know one thing. Sir, आप फौज में रहे, फौज में हर कोर्स कर दिया आपने, right from MBA to PhD to doctorate to medicine to first aid to every. That is my take. Now let's hear your answer, sir. एक्टिंग तो कोर्स मैंने कोई नहीं किया. I just got a chance for acting. Yeah, but I remember my first time. What happened was, I was doing photo shoots and ramp walks basically, and somebody called me for a audition for TV commercials, and I did not know anything about what is an audition and what is supposed to be done there. So एज अ फौजी अपना वही पैंट शर्ट पहन के टक इन करके बेल्ट बांध के पहुंच गए, बाल बुल सेट 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 सूट करके पहुंच गए वहां पे. और वहां पे देखा तो 50 लोग और बैठे हुए थे एक ही कमरे में. एंड सम इट वाज सम इन्वर्टर का था, सम इन्वर्टर. दे वर ऑडिशनिंग फॉर सम काइंड ऑफ इन्वर्टर, एंड दे वर टेलिंग ऐसे ऐसे करना है, वो स्क्रिप्ट बताते हैं एंड पीपल ऑडिशनिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड रेस्ट ऑल. तो मेरा वहां पे धक 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 शुरू हो गया कि मतलब जैसे पहली बार आप एनडीए ज्वाइन कर रहे हो, ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर रहे हो. मैंने समझ नहीं आ रही क्या है क्या. दे कॉल्ड मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बताया उन्होंने स्क्रिप्ट, मैंने कर दिया, बोला हो गया. मेरा हो गया. बोला आपने तो कुछ किया नहीं. मेरे को आए जैसे ही कैमरा के आगे आया मैं, तो आई वाज शिटिंग ब्रेक्स बेसिकली. एकदम से हुआ, रही क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा, पसीना आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा. After that I realized कि नहीं, it requires certain amount of training. You cannot be just walk in front of a camera and be so natural कि हाँ, camera fear was there with me, but not on still camera. So I decided that for next 3-4 months, whatever audition comes, I will not go. I will work on myself and then try to go for a moving camera. Still camera, I am very confident. So I took my time. I used to watch movies and act in front of the mirror. कैसे होता है, कैसे होता है, लोगों के auditions देखो, अच्छा ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है. See the actors, how do they do. Then from there started learning
कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाउ डू यू एक्ट इन दिस सिचुएशन, हाउ डू यू इंटरेक्ट। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है देख देख के लोगों को से। एंड काफ़ी कुछ वो देखा मैंने कि जब तक आप वेन टिल द टाइम यू आर डीपली इनटू इट, यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज द जैसे ही आप फेक करते हो कैमरा फटाफट पकड़ लेता है। सो यू हैव टू बी टोटली इनटू द कैरेक्टर एंड सोचना पड़ता है उसके बारे में कि हाँ आप ऐसे हो और तब करो। दिस आई लर्न फ्रॉम people who I've worked with. I've worked with Amitabh Bachchan, I've worked with Deepika Padukone, I've worked with Nagarjun, I've worked with Balakrishna sir in Telugu movie, I've worked with Ravi Teja in Telugu movie, I've worked with Akshay Kumar. So इनका देख देख के इनके साथ काम कर करके बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड देन आई रिहर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर कि अच्छा ये ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ, एंड आई वॉच मूवीज ऑन दैट पर्सपेक्टिव कि कैसी चीज कैसे होती है, एंड लर्न फ्रॉम दैट, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। That's very nice. Sir, Bachchan साहब से आपने काम करा है, and you know Bachchan साहब has done some very very convincing roles of Fauji in a lot of movies. One living example is in Lakshya. लक्ष्य में जो वो कमांडिंग ऑफिसर का वो रोल अदा करते हैं। आपने आपकी बच्चन साहब से कुछ गुफ्तगू हुई कुछ फौज के बारे में? और when people got to know that you are an army ex-army officer, how was their respect towards, not towards Nitin Mehta but towards Colonel Saab sir? Respect is immense. I remember I could not have long conversation with Amitabh Bachchan sir because वो हमेशा घिरे रहते हैं। जरा सा फ्री टाइम होता है he just rushes off because फ्री होते ही उनके पास इतनी भीड़ लग जाती है, मुश्किल हो जाता है संभालना। बट सबसे अच्छी बात मेरे को उनकी ये लगी थी, आई वर्कड with him in two projects. First project I met him for the first time and I just had a brief conversation कि sir I'm so and so and I'm an ex-army officer. Very nice actually. And the next project was about 3-4 months back after that, and that project was a huge project and in which there were a lot of actors and all. But the best part was is when he turned around and we were standing and he saw me and he came to me, "All right, you are still there? Oh, yeah, here. Nice to meet you. Once again, we are meeting." And that stuck me. And a person of that stature and for that level, what he works with so many actors every day, he remembers me. When I had a brief conversation with him. That's hats off to him. With Akshay Kumar, yes, he had huge respect for army people. He also is from army background, defense background. So yes, definitely there is a lot of respect for army people. In fact, and I am working in Telugu and Tamil industry now, right now, with big stars. Everybody they have got huge respect for the uniform. I would say that definitely. I would say that. सर सर आप साउथ में बहुत छाए हुए हैं आप, यू नो एवरीवेयर इन साउथ स्पेशली यू आर वेरी वेरी पॉपुलर देयर, एंड आपकी विजिबिलिटी इन मेन स्ट्रीम इन मुंबई एज वेल इट इज देयर, बट comparatively relatively in south it's much more. Was it a conscious choice to go down south or just happened? And if at all it happened like that, how did it happen sir कि साउथ के ही वहां पे predominantly आपने वहां पे concentrate किया? Uh, South, man, I did not target South initially. I was just working. Whatever good work comes, I am open to all kind of work. But during COVID, when COVID happened, work had suddenly stopped. There was total halt in the work, and for about 7-8 months, there was nothing. So in between, suddenly I would say it is luck totally and some uh, God's hand in it that I got a call from somebody that people are looking for you in Hyderabad. I got a call from Mumbai because my profile and my numbers were floating in Mumbai. But he told me that we have given your number to Hyderabad. So there's some movie they are looking for some villain role or something. So मैं ठीक है होगा villain role. आते रहते हैं बहुत सारे विलन रोल्स मिल जाते हैं ना कि यू गॉट अ नेगेटिव शेड माइट बी अ 4-5 days छोटा सा रोल है क्या है आई हैड नो आइडिया एंड इट वेंट ऑफ डेड अगेन एंड it was in August 2020. I still remember, and suddenly everything went lull after that. September, October, nothing happened, no call came, nothing.
And on 18th of November, sorry, 16th of November, 2020, I got a call that we want you to be in Hyderabad, so and so production house, and are you free on 20th? Also, sorry, on 18th of November. I'm free. Well, we are booking your tickets. Come and meet us, and we want to discuss you about the project. So I just went with my open mind. Ke hai kya? And there I found that it was a, I think, huge, biggest project I've ever heard. What I had, because I was being casted opposite Balakrishna sir, who's done already 108 movies in Telugu. He's a MLA there, and he's a living legend. He is the son of senior N.T. Ramarao, and they're planning to cast me as a main villain in that. So after that story and all, everything happened. I asked, okay, how did you find me? Because my numbers and all. Well, we found you from your Instagram posts. We saw your looks, and few of the looks was that we it suits our villain. So that was my starting point. That was a huge project where I got a lot of recognition by the people of Andhra Pradesh, from people of Telangana, and obviously here also, because this movie was in Telugu, and after 1 year that Hindi rights were taken and it was released in Hindi also. That was my point, which gave me a break. From that, I got five more movies, three Telugu and two Tamil. So predominantly, that's why I did not plan it to be there. And so when I got this movie, so I just went with these because I got good roles in this, good story. So people think that yeah, I am targeting something south. It is not that way. I'm targeting. Yes, work is good. Good work is coming there. So definitely, I am there, and in fact, I'm loving there. I'm loving there. The amount of respect I get, the amount of love I've been receiving from people from Telangana, from Andhra Pradesh, from Tamil Nadu, in fact, whole South. It's tremendous, tremendous. I'm indebted to them. They've let me enter their industry with their open arms. They've welcomed me so much, so nicely, and with their open arms, with their open hearts. I am deeply touched with that. Sir, sir, Tamil Terima, Kunju Kunju Terima. Konjo konjo, trying to learn tel. Sapod, sapod illa. After some time, Right. we'll have sapod also. Ava, ava. I grew up in Yeah. Tamil Nadu, sir. In Okay, fact, okay, okay. we have a Founders Day right now. It's happening at my school, Lawrence School of Acha. DHS in UP. So Oh, that's nice. on your please. Ja, ja. Sir, it's been such a pleasure and such a delight speaking to you, sir, being in conversation with you. And you have amazing aura, amazing personality, amazing positivity, sir, आपकी. और आप छा जाएंगे सर अभी आपने दोस्तों अभी सर ने तो बस शुरुआत करी है आप देखिए ऑलरेडी सर की फॉलोइंग सर लेट मी टेल यू एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर द ब्रदर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सीना फखर से चौड़ा होके बोलता हूँ कि मैं सर का जूनियर हूँ फौज का और द ऑलिव ग्रीन जिंदाबाद एंड सर रियली मोर पावर टू यू सर Thank you so much for having me here, for giving me opportunity to come here and express my thoughts here. Thank you so much. Thank you. Sir, thank you so much for consenting to give me time, sir. Very kind of you, sir. Very, very kind of you. And sir, Thank you. आपने Because एक this is, एक चीज it was easier for me today because yesterday I was in Mumbai, came back around 2. So I thought I was running busy for last few weeks. So not able to time because you were, I think we had discussed this about a month back that we should come together here, and but it was getting very difficult for me to find out time. So but yes, this is part and parcel of this profession. So it's good in a way that we have to find out time because time is always short. absolutely, sir. Sir, thank you very much, sir. Truly, sir, you are truly an inspiration for a whole lot of people. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. Thank you, Jai Hind.